a bit introduction of this. अगर आप में से जो physics लेते हैं तो you already heard that word before, vectors. So what do you know what is a vector? Yes. Yeah. So there are two types of quantities. One is scalar quantity and the other is vector quantity. ये जो मैं बता रहा हूँ इसका मैथ्स में ऐसा कोई लिंक नहीं होगा. लिंक का मतलब ये कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करें तो वेक्टर हमें पता होना चाहिए है क्या. There are two types of quantities, scalar and the other is vector. The main difference between them is the direction. Means scalar quantities are having only the magnitude, whereas the vector quantities are having magnitude as well as direction. क्या मतलब? अगर मैं ये कहूं कि आई एम पुशिंग दिस टेबल, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, या मैं फोर्स इज अ फिजिक्स वर्ड, सिंपली मैं कहता हूं पुश कर रहा हूं मैं इसको, और फिजिक्स में इसको कहते हैं आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, और इन फिजिक्स यू हैव द यूनिट ऑफ फोर्स एज वेल, से न्यूटन. अगर मैं कहता हूं कि आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, या मैं 10 के फोर्स से इसको पुश कर रहा हूं, so that 10 न्यूटन इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक नंबर है 10 न्यूटन. बट so this is a scalar quantity. I would say 10 newton is simply a scalar quantity. But if I say I am applying the force on that table, the 10 newton force on that table towards west, towards east, mean 10 newton के साथ साथ में अगर उसमें direction भी add कर दूं, then that will become the vector quantity. So the main difference is the direction. The easier example is if you are driving a car, say you are driving your car with a speed of 50 kilometer per hour. So you are driving, the speed is 50 kph, 50 kilometer per hour. So that 50 kilometer per hour is simply the magnitude. So that's your speed. This is scalar quantity. But if you further mention that I'm driving my car with a speed of 50 kilometer per hour towards south. So towards south, now you are telling your direction as well. Along with that magnitude, speed के साथ साथ आप direction भी बता रहे हैं. Now when you have added that direction here, now it becomes the vector quantity, जिसको आप velocity कहते हैं. So generally I would say कि vectors are those quantities in which direction is very important. Direction should be there. अब मैथ में जो हम वेक्टर पढ़ेंगे, जो आपने फिजिक्स में पढ़े हैं उनसे काफी डिफरेंट होंगे. मीन हम ज्यादा कैलकुलेशंस की तरफ यहाँ पे जाएंगे. वेक्टर्स की डायरेक्शन, लेंथ ऑफ वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, डिफरेंट पाथ्स. तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फिजिक्स. So when the direction is important, how to represent a vector? Say if I say that this is a point A and this is a point B. If I join these 2 points with a line segment, this is a line segment AB. So this is a line segment. If I put the direction here, say I say that this is the direction. Now this becomes a vector. इसमें डायरेक्शन ऐड कर दी मैंने बता दिया कि you have to move from A to B. Now this becomes the vector. और इस वेक्टर को लिखते कैसे हैं? We used to write AB, and on top of AB there is an arrow, and this arrow is telling us that we have to move from A to B. AB के ऊपर जो arrow है, this is showing vector AB. If I say there is a point C here and D here, if I join them with a straight line, that is CD, my direction is important. तो अगर मैं यहाँ पे direction ऐसे draw कर दूं, ये arrow middle में end पे कहीं पे भी हो सकता है. So this time I am showing my direction from D to C. So this is a vector DC, because
direction is from D to C. So how to write this vector? I will write this vector DC like this. CD नहीं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप इसको यू लिखते हैं, CD लिखें और ऐसे लिखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये नोटेशन यूज नहीं की जाती. So it's better कि आप इसको यूज ना करें. So DC, vector DC, so you should write D first, C second, and then your arrow should be like towards right. Okay, so ये vector AB DC vectors हैं. Now the question is how to describe the direction of a vector, or simply we can say how to write a vector in a particular form, and that particular form mean किसी भी vector को आप कैसे describe करेंगे. So to describe a vector we need a column vector. What is a column vector? थोड़ा सा इस चैप्टर में मेट्रिसेस यूज होगा, बट वो जो मेट्रिसेस आपने पढ़ा है वो अच्छा खासा पढ़ा हुआ है. यहाँ पे सिंपल यू शुड नो द एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो थोड़ा सा वेक्टर्स में से सॉरी मेट्रिसेस में से I want to recall, if I write here 2 3 5 7, this is a matrix. What is the order of this matrix? What is the order? Order mean number of rows by number of columns. What are rows? Yes, 2 by 2. So the order of this matrix is 2 by 2. 2 by 2 mean number of rows. The number of rows are the horizontal lines. So there are two horizontal rows, two horizontal lines. Horizontal lines are called rows. So 2, and the second 2 is telling the number of columns. So number of columns are the vertical lines. So there are 2 rows and 2 columns. So this is the matrix having the order 2 by 2. What is the column matrix and what is a row matrix? वहां पे मेट्रिसेस में ऐसा कहीं यूज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जब स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया था तो बताया था कॉलम वेक्टर क्या होता है और रो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है. A matrix having one column is called column matrix, and a matrix having one row is called a row matrix. For example, if I write a matrix here 3 5, how many columns are there in this? In this particular matrix there are 2 rows and 1 column. So column is 1. So this is called column matrix. और अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिखूं जिसकी एक रो हो, मीन 5 8, now this matrix has 1 row and 2 columns. So there is 1 row, so that matrix is called row matrix. हम यहाँ पे वेक्टर में क्या यूज किया करेंगे, कौन सा? दिस वन. कॉलम मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम इस वेक्टर में इसको कहा करेंगे कॉलम वेक्टर. So ये column vector, we will be using column vector to describe the direction of any vector. ये column vector का यूज क्या है? हम किसी भी वेक्टर a b को we can represent in the form of a column vector, and that column vector can be x y. जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं एक समरी बनाऊंगा कोई इस पेज पे. So the first important thing is we can represent any vector AB in the form of a column vector xy. So ये वो first thing है which we are going to study in this chapter. Now what does it mean we can represent any vector AB in the form of column vector xy? What is x, what is y? So x is the movement of your vector along x-axis, or you can say along horizontal axis. मेरा है ना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एग्जांपल दूंगा ये सारा समझ आएगा, इतनी मुश्किल चीज नहीं है.
So x is your movement along horizontal axis. Horizontal axis में तो movement right भी हो सकती है, left भी हो सकती है. And y is the movement of your vector along vertical axis. And vertical axis में it can be upward and it can be downward. So I am repeating, x is the movement along x-axis, along horizontal axis, either right or left. If you are moving towards right, your x will be positive. If you are moving left, your x will be negative. Similarly for y is vertical movement. If you are moving upward, your y will be positive. If you are moving downward, your y will be negative. ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में जो मैंने बातें बताई हैं, उसको मैं फर्दर क्लियर करता हूं एक डायग्राम से. आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रिड. अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वो यूज कर सकते हैं, बट अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप सिंपल आपके पास जो पेज है उसी के ऊपर एक एक्स वाई प्लेन बना लें. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, जितनी देर में मैं भी कर रहा हूँ. Zainab Khan, please turn your camera on. Okay, now see here, please stop writing. Stop writing, please. I'm saying the point A is having the coordinate 1, 1. So if I label that point here, this is the point A, 1, 1, having the coordinate 1, 1. There is another point B whose coordinates are, say, 4, 3. If I label that point here, 4, 3 is somewhere here. If you are doing on the graph paper, तो exactly आ जाएगा. But I think आपके पास at least lining वाली copy है, तो फिर भी आपको idea बेहतर होगा as compared to here. So this is the point B43. If I join these 2 points, I will get a line segment. ये line और line segment में क्या difference होता है? वैसे ही बीच में बोल आ गया है, यहाँ पे इसका कोई लिंक नहीं है. Line basically extend होती है दोनों तरफ arrow होता है. Line infinite होती है. Line segment जो होता है वो एक part होता है line का, जो कि A से start हुआ B पे and that's it. Okay, so this is a line segment AB. If I put an arrow here which shows that direction of, now it becomes a vector AB. इसमें direction add होगी. Now it becomes the vector AB. Now my question, we are trying to understand this thing, how to represent any vector AB in the form of a column vector. So अब जो previous diagram में I want to write the column vector for this AB. So I said AB, any vector can be written in the form of column vector x, y, and I mentioned what is x. X is your movement along horizontal axis. Y is the vertical axis.
So if you are moving on horizontal axis, if you are moving right, x will be positive. If you are moving left, x is negative. Vertically, y, if you are moving upward, y is positive. If you are moving downward, y is negative. Now this direction is telling us that we have to start from A. We are moving from A to B. We have to go from A to B. अब आप देखें A से B जाने के लिए first we will count our horizontal movement. Horizontal movement mean, अब मुझे बताइए, you are standing at A, you want to go at B, will you move right or left? up या down पहले नहीं जाना. X, Y हम लिखते हैं column, तो पहले X, first movement along X axis. So from here you need to go right. So you need to count the number of units you have to move right to reach at B. So देखिएगा, I'm going to start 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right. Now we are exactly below B. अब आगे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं. So to move from A to B, you have to go 3 unit right. So 3 unit right, I would write vector AB. Because 3 unit right, so right means positive 3. And now from that point, जहां पे आप पहले पहुंचे थे, यहां पहुंचे थे आप, यहां से आगे, now you have to go up or down? Upward. So upward कितना जाना पड़ेगा? 1 unit upward, 2 unit upward. So you have to move 2 units up. So up means positive 2. So the column vector AB is 3, 2. This 3, 2 is telling us that we have to, this vector has that direction like a 3 unit right जाता है और 2 unit up. अगर कोई 2, 3 लिखेगा, मतलब वो ये बता रहा है 2, 3 क्या, will that be correct? पहले आप, अक्सर आप मिस्टेक करते हैं कि आप पहले वर्टिकल काउंट कर लेते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल. दिस इज रॉन्ग. I wrote x, y first along x axis, along horizontal axis. So this is vector AB 3, 2. Let's take another vector. C is a point here whose coordinates are -1, 3. This is a point C. Its coordinates are -1, 3. There is another point D whose coordinates are -4, 0. If I join these 2 points, I will get a line segment CD. I want to find the vector CD, so my direction will be CD, mean this should be the direction. Now I want to write the column vector for CD. G, please try to find out the column vector CD. -3. It's not -3 by nahi kehna isko, it's not fraction, it's column vector. So what did you say? -3 and 5 and 3. Yes, आपका जो अपना आंसर है आप बताएं. ये तो हैंग हो गया शायद. Yes, if you count from C to D जाने के लिए, first you need to move towards left. C से D जाने के, start from C. Start from C. So you need to move towards left. कितना left? 3 unit left. And then you have to move down. और कितना down? 3 units down. So it should be -3, -3. Did you get that? So I'm वो गिवन है ना, गिवन है वो क्वेश्चन में. मैंने खुद कहा था CD फाइंड करें. जब मैंने कहा CD फाइंड करें, इसका मतलब C से D जाना है.
तो सी से डी की तरफ एरो आएगा, तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी करेंगे अभी हम। So C to D is, so you need to start from C. So 1 unit left, 2 unit left, 3 unit left. So 3 unit left mean -3. And then further you need to go down, 1 unit down, 2 unit down, and 3 unit down. And 3 unit down mean -3. So the vector CD is -3, -3. Okay, on your notebook, label another point. Q. Q is, the coordinates of Q is 0, -1. Label Q 0, -1. And then another point P. Label that point P 4, -2. Your Q is 0, -1 and P is 4, -2. Just join the point P and Q. Okay, now the question is you have to find vector QP. So if you want to find the vector QP, अगर मैं वहां पे डायरेक्शन शो करना चाहूं तो कैसे शो करूंगा? The direction of arrow will be towards P, means starting from Q, ending at P. So it should be like that, 4, -2. So QP, so starting from Q, ending at P. You need to write the column vector for QP now. 4, 1, you said? Recheck. 4, -1. Yes, see, अगर आपने Q से start लिया, तो जब Q से start लिया, so do we have to move right or left? Right, कितना right? 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right, 4 unit right. So 4 unit right mean +4. Then you need to go 1 unit down. So right or pair down. So 4 unit right and 1 unit down. So 4 unit right, 4 positive, 1 unit down means 1 is negative. So -1. So that is how you will write your column vector. I hope it's not difficult. So ये basically direction बता रहा है. अगर A B 3 4 के लिखा है, इसका मतलब 3 unit right, 4 unit up. If your vector AB is -3 1, so it means 3 unit left, 1 unit down. So आप थोड़ा सा उसको आइडिया आपको हो सकता है कि वो वेक्टर किस तरह का होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी. मीन अगर मैं इवन विदाउट हैविंग दैट ग्रिड, मैं सिंपली अपने लिए थोड़ी सी अगर डायरेक्शन बताना चाहता हूँ कि एक वेक्टर पी क्यू है विच इज -5 1, तो मैं कहूंगा अगर सपोज मैं यहाँ पे रखूं P, तो Q कैसे होगा, कहाँ पे कहीं Q होगा? आई विल सी कि P Q इज -5 1 मीन 5 यूनिट लेफ्ट, कुछ ऐसा होगा, 5 यूनिट लेफ्ट आएगा इस तरफ, और फिर 1 यूनिट अप. सो 1 यूनिट अप मींस समवेयर हियर इट विल बी Q. सो आप आइडिया कर सकते हैं कि ये वेक्टर P Q कुछ ऐसा होगा. थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 5 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट, तो आपको इससे डायरेक्शन का आइडिया हो रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है. Okay, on the same diagram, so that's the first thing we have done, how to write a given vector in the form of a column vector. अगर डायग्राम गिवन हो तो उसको देख के कॉलम वेक्टर आप लिख सकते हैं.
और अगर कोई कॉलम वेक्टर गिवन हो तो उससे आप लेबल भी कर सकते हैं। मैं कोई आगे क्वेश्चन दूंगा जिसको हम खुद से ड्रॉ भी करेंगे। ग्राफ कॉपी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, if I ask you to find the vector BA, let's find BA. Ji, tell me the vector BA from your diagram. Count and tell me what is the column vector BA. So BA means this time you need to start from B and end at A. So the direction of B vector is from B towards A. अगर आप चाहें तो उसको चेंज करें, डायरेक्शन ऐसे बना लें, बट आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बी एंड एंड एट ए। बी और ए ऑलरेडी बने हुए हैं वहां पे। यस, नाउ योर काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम बी। सो अगर मैं बी से स्टार्ट करूं काउंटिंग, देखिएगा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम बी, डू वी हैव टू मूव राइट और लेफ्ट? वर्टिकल तो जाना ही नहीं है ना पहले, राइट और लेफ्ट। सो लेफ्ट, सो लेफ्ट में देखिए 1 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट लेफ्ट। So to move from B to A, you need to go 3 unit left. So 3 unit left mean it is -3. And further you need to go 2 unit down. So 1 unit down, 2 unit down. So 2 unit down mean -2. So in the same way you have calculated the vector BA as well. Now tell me the vector PQ from the diagram. So PQ mean direction will be reversed. You need to start from P now. So P से Q जाना है, so here is P. So you need to start from P. So P say you need to move left 1 unit left, 2 unit left, 3 unit left, 4 unit left. So 4 unit left mean -4, and then 1 unit up mean +1. Any problem? So now let's observe these two vectors, these two first. See, the vector AB was 3, 2, and the vector BA is -3, -2. What is happening here? The signs are opposite. See this one. Your QP was 4 -1 and PQ is -4 +1. So signs are again opposite. So it means we can say that when we are changing the direction of a vector, the signs will be reversed. So if we reverse the direction of a vector, the signs will get changed. So this is the second point we need to write. So second important point is, can we say AB is equal to BA? In vectors, AB is never equal to BA. ये equal in vectors, क्योंकि डायरेक्शन उनके डिफरेंट, तो क्या फिर इक्वल होता है? ऑपोजिट, साइन चेंज हो जाता है। सो AB is equal to -BA. That's the second fact, that if you change the direction, देखिए मैंने AB से डायरेक्शन चेंज करके BA कर दिया, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? माइनस। आप देखें, अगर AB 3, 4 है, तो BA क्या होगा आपके पास? -3 -4 होगा। अगर इनके लिए इक्वल करना है, इनको इक्वल कब होंगे? जब BA को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 +4 हो, तब वो AB के इक्वल होगा। सो BA को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब वो AB के इक्वल होगा। या सिंपली आपको इसमें यही याद रखना है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। इफ यू नो द वेक्टर PQ 3 -7, if you know the vector PQ is 3 -7, then what will be the vector QP? It would be -3 +7.
So signs, if you are changing that direction, the signs will also be reversed. Okay, अब एक ग्रिड आप बनाएंगे जिसके ऊपर मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगा और आपने वेक्टर ड्रॉ करने होंगे और कुछ फैक्टर फाइंड भी करने होंगे। आपका ग्रिड जो होना चाहिए, इट शुड हैव अ स्केल फ्रॉम -6 to 6 x axis and -6 to 6 positive -6 to 6 on y axis. Scale should be 1 centimeter to 1 unit. Draw a grid, xy axis. इसकी क्लास की टाइम कब तक है? 9:15 तक, 9:15 तक है। Okay, if you have drawn the grid, my first question is, on your grid, label point A, which is 1 1, पहले भी यही था। A point is given, you need to label that point A 1 1 first. Then vector AB is given, and vector AB is given 3 2, and the question is, you need to label point B on the diagram. You have point A, you have vector AB. Point B is not given, you need to label it yourself. मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको काउंटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक करें तो एक अलग बात है। If I label A first, which is 1 1, so this is A. Now we need to label point B, and what information is given? The vector AB is given. So vector AB mean, vector AB is given 3 2. So इसका मतलब ये है कि vector AB एक ऐसा vector है जो 3 यूनिट राइट जाएगा और 2 यूनिट अप। So A से B हमने जाना है तो 3 यूनिट राइट 2 यूनिट अप। So start counting from A, जहां पे 3 यूनिट राइट 2 यूनिट अप एंड होगा, that will be the point B. So 3 unit right. So 3 unit right mean this is 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right, and then 2 unit up. So 2 unit up, here is 1 unit up, and this is 2 unit up. So this is the final point. So this should be the point B. Because it is given that vector AB is 3 2, mean you need to move from A to B 3 unit right and 2 unit up. And the requirement of the question was just to label the point B. So yes, we have labeled that. But अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि बताना चाहते हैं कि क्या आपने करेक्टली लेबल किया है, तो आप मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स बता दें, आपके क्या आए हुए हैं। What are the coordinates of B? Are you getting 4 3?
Yes, if you are getting 4 3, so it means your labeling is correct. जी, is that clear? ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Okay, second part. Vector BC is -5 1. Label point C. Vector BC is given -5 1. You need to label point C on your diagram. जी, what are your coordinates? Because आप एक तो या तो मुझे शो करेंगे, जो कि मुश्किल काम है, सब दिखाएं। बेहतर है आपने जो सी लेबल किया उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताएं क्या आ रहे हैं आपके। माइनस, यस फातिमा, व्हाट डिड यू गेट? -1 4। जी, आपने क्या बताया था? -5 1 was BC. BC is -5 1, so mean you need to start from B. You need to go 5 unit left or 1 unit up. So B से start लेना है, 5 unit left mean 5 unit left. ये already point B, तो C B जो है उसका y coordinate 3 है. So 5 unit left, 1 2 3 4 unit left. This is 5 unit left. Now +1 mean 1 unit up. So 1 unit up जाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. So it means this is your point C. This is your point C. आप ऐसे आए 5 unit left और ऐसे ऊपर गए 1 unit up. So the coordinates of C should be -1 4. ठीक हो गया? Third part, find the vector CA. Now you need to write the vector CA, mean I'm asking for the column vector CA. अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, सी को ए से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करके पहले वेक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट ज्वाइनिंग, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की नहीं है कि आपने ज्वाइन करना है, लेकिन आप ज्वाइन करके बताएंगे तो भी बिल्कुल ठीक है। ये मीन वेक्टर बना के अगर आप करना चाहते हैं। जी, व्हाट्स द कॉलम वेक्टर? So to find vector CA, we should start from C or A? We should start from C. So अगर C से स्टार्ट करेंगे तो पहले आप राइट जाएंगे। यस, पहले हम राइट जाएंगे, ऐसे C से स्टार्ट करना, और फिर आप A की तरफ आने के लिए डाउन। सो राइट एंड देन डाउन। अब राइट कितने कितने यूनिट्स जा रहा है? 2 यूनिट राइट एंड डाउन 3. So 2 unit right mean +2 and 3 unit down mean -3. So it is 2. अगर आप वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, C को A से ज्वाइन करके वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यू आर लुकिंग फॉर CA, so ये डायरेक्शन होगी उसकी। So the vector CA is C से स्टार्ट लेना है,
2 unit right, so 2 unit right mean positive 2, and 3 unit down mean minus 3. So this is the column vector CA, which is 2 minus 3. Last part, find the vector, in fact write the vector AC. So simply change the signs of the vector CA. CA जब आपके पास already है तो आपने AC find करना है, opposite vector find करना है, तो सिर्फ उसी के आप sign change कर दें, और जब sign change करेंगे तो positive 2 will become negative 2 and negative 3 will become positive 3. So this is the vector AC. G, is that clear? So in this first lesson of vectors, हमने जो थोड़ा सा introduction किया है, basically we learned two things. How to write any given vector in the form of column vector, and secondly, when the direction of a vector is reversed, its signs of x and y component will be changed. See you inshallah tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.